Now you see, we have to start with the second derivation. Today's second derivation, that is derive an expression of for electric potential energy of system of 3-point charges in the absence of electric field. Now this is the second derivation. This is also for 3 marks they will be asking, and here we have to consider in the previous two derivations what we have done. In the first derivation, we have seen that the 2-point charges are present in the absence of electric field. Today's first derivation, we have seen that the 2-point charges in an external electric field. But the second derivation, today's second derivation is that electric potential energy of the system of 3-point charges in the absence of electric field. तो डिफरेंस समझ में आया तीनों डेरिवेशन का कैसे रिलेशन है, और एक बार समझ लो कल का जो हमने पहला डेरिवेशन किया था इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके बारे में था? वो था 2-point चार्जेस हैं जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लेकर आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो उसके लिए हमने क्या कंसिडर किया था, दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी पे रखा था और 1 by 1 वी आर ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्जेस। पहला फर्स्ट चार्ज Q1 लेकर आते हैं। जब हम Q1 लेकर आएंगे तो क्या होगा, Q1 को कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि Q1 जब आ रहा है उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे नहीं था। तो हम क्या करेंगे, Q1 को लाते समय में देयर इज़ नो वर्क डन, मगर जब Q2 को ला रहे हैं तब क्या होगा, Q2 को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी ए पॉइंट पे Q1 रखा हुआ है। तो Q1 क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा E। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट कर रहा है Q1, तो Q2 जब आ रहा है तो उस Q2 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो हमने कल का डेरिवेशन जो देखा था पहला कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डिराइव किया था, दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 by R। फिर आज का जो दूसरा पहला डेरिवेशन देखा था उसमें क्या किया था कि 2-point चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो आज का पहला डेरिवेशन हमने ये कंसिडर किया, तो 1/4πε0 Q1 Q2 by R प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2 हमको मिल गया। ओके, ये डेरिवेशन हमने देखा था। सो अब का जो सेकेंड का डेरिवेशन है, सेकेंड डेरिवेशन है आज का, in this derivation we have to see that 3-point charges are brought in the absence of electric field. So 3-point charges when we are bringing, so it means that initially all the 3-point charges are at infinity. So what we have to consider? We have to consider that all the 3-point charges are at infinity. Q1, Q2, Q3 are the 3 charges which are at infinity. So 1 by 1 the charges are brought into the system. Okay, so they are assembled in the form of a triangle because 3-point charges hai, already it will form a triangular plane. 3-point charges are there. So first we will consider the point A, second we will consider the point B, and third we will consider the point C. So first what we are doing is we are considering that Q1 is brought and kept at A. Second we are bringing the Q2 and keeping at point B. And third we are bringing the point C, Q3, and keeping at point C. So now you consider that when I am bringing the first point charge Q1 at A, this Q1 will not do any type of work. Why it will not do any type of work? Because Q1 is brought in an absence of electric field. So when Q1 is brought, Q1 will not do any type of work because it is brought from the infinity, and when Q1 is brought from infinity, Q1 will not have any type of experience, any type of force. Since it is not experiencing any type of force, no work is done by the Q1. Okay. Second, what we'll do? Q1 is brought and kept at A. Second, I will bring the charge Q2 from infinity and kept at B. So when I am bringing the charge Q2 and keeping at point B, now you little bit think, then when Q2 is brought and at the point B, this Q2 will experience a force
or experience an electric field due to Q1. So the distance between A and B is R12. So what will happen? There will be a potential, or Q2 has to do some work against the Q1. So since it is doing some work, we will say that it will be having some potential energy. So what will be the potential energy? So what will be the work done? Work done will be given by W12. Why I am taking W12? Because this is the first charge and Q2 is the second charge. So the work done W12 is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. The distance between this is what? R12. Clear again? Now, third point, when the Q3 is brought from infinity to point C, now little bit just imagine. Then when Q3 is brought, Q3 has to do two type of work. Because first of all, it has to overcome, it will have the force due to the Q1 also, and second thing, it will have the force due to the Q2 also. Because Q1 is also creating the electric field, Q2 is also creating the electric field. So when the third charge Q3 is brought at the point C, this Q3 has to do the work against the Q1. Also, Q3 has to do the work against the Q2. So the distance between when it is doing the work against the Q1, so C and A, distance between C and A is given by what? R13. Similarly, when it is doing the work against the Q2, the distance between them is given by what? R23. So what I have to do? So when C point is brought near the, when the charge Q3 is brought at the point C, this Q3 has to do two types of work. First work is W13 and second work is W23. Why W23? Because W23 indicates the work done between the Q2 and Q3. Similarly, W13, what is W13? It is the work done between the Q3 and Q1. So total work done by the C will become what? Sum of W13 and W23. समझ में आ गया? ये लॉजिक है. अभी मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? W12, W13 एंड W23, इन तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा. समझ में आ गया? तो इस टोटल वर्क डन when the 3 point charges are there in the absence of electric field, so I have to consider in this manner. अभी हम देखेंगे. ये समझ में आ गया पूरा ये? तो और एक बार समझ लो, इसको रिवाइज कर देता हूँ फास्टली. जब हम 3 पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं Q1, Q2 एंड Q3, all these 3 charges are kept initially at the infinity. When they are kept initially at the infinity, so there will be an absence of electric field for the first charge Q1. So first charge Q1 कहाँ पे ला के रख रहे हैं? A पे रख रहे हैं. जब फर्स्ट चार्ज Q1 A पे ला के रख रहा हूँ, तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि W के ऊपर, W1 के ये जो Q1 है उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज 0. क्लियर हो गया? दिस इज बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड टू अपोज दिस चार्ज. वाई दिस हैपन्स? बिकॉज Q1 को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं टू अपोज करने के लिए. क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? Q1 चार्ज जो है पॉइंट ए पे रख दिया हमने. अब सेकंड क्या करेंगे? Q2 लेकर आएंगे. जब हम Q2 ला रहे हैं तो Q2 क्या करेगा? जैसे ही Q2 को B पॉइंट पे रखेंगे तो Q2 को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू Q1. सो द वर्क डन in bringing the charge from Q2 from infinity to the point B is given by what? W12, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. R12 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट चार्ज एंड द सेकेंड चार्ज इज R12. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? W12.
सो मेरे पास इधर W12 का क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ये सेकेंड चार्ज जब मैं इन्फिनिटी से पॉइंट बी के ऊपर लाता हूं तो वर्क डन कितना होगा, W12। अभी मैं तीसरा चार्ज कंसिडर करूंगा, यहां तक समझ में आ गया W12। अब नेक्स्ट इज व्हेन आई ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट C, तो जब C पॉइंट पे लाके रख रहा हूं, तब जरा फिर से और एक बार ये डायग्राम देख लो। जब Q3 C पॉइंट पे लाके रख रहा हूं तो इस C को, Q3 चार्ज जो C पे रखा हुआ है, इसको दो टाइप के फोर्सेस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। एक तो Q1 की वजह से जिसका डिस्टेंस है R13, और दूसरा है Q2 की वजह से जिसका डिस्टेंस है R23। सो Q3 के लिए दो टाइप के वर्क होंगे, वन विल बी W13 एंड दूसरा विल बी W23। सो द वर्क डन W13 जो वर्क है दैट इज गिवन बाय, फॉर्मूला अपने को मालूम है, 1/4πε0 Q1 एंड Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है A और C के बीच में, R13, प्लस W23 क्या होगा, 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो यहाँ पर अभी क्या देखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट C इज गिवन बाय W13 प्लस W23। ये समझ में आ गया W13 W23 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि चार्ज Q3 को दो टाइप ऑफ फोर्सेस से अप्लाई होना पड़ेगा। फर्स्ट फोर्स रहेगा ड्यू टू द Q1 एंड सेकेंड फोर्स रहेगा ड्यू टू द Q2। Q1 और Q2 will be applied, the electric field will be applied on the Q3. So work done W13 will be given by 1/4πε0 Q1 Q3 by R13, plus W23 is given by 1/4πε0 Q2 Q3 by R23। R13 और R23 समझने वाली बात यह है, R13 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C के बीच का डिस्टेंस है, जिस पे A पे Q1 रखा हुआ है और C पे Q3 रखा हुआ है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना लिया हुआ है हमने, R13। R23 के, व्हाट इज R23? R23 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड B। सो B के ऊपर Q2 रखा हुआ है, C के ऊपर Q3 रखा हुआ है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द charge Q3 from infinity to the point C will have the two types of work done. First is W13, second is W23. So both these work is given by what, 1/4πε0 Q1 Q3 by R13 plus 1/4πε0 Q2 Q3 by R23. Is it clear? Now we have taken the W12. W12 is the what, charge Q2 when brought to the point B. Similarly, when we are bringing the charge Q3 at the point C, it has to do the two types of work, W13, W23. What is W12? W12 is the work done by the charge Q2 when it is kept at point B. So now if I have to calculate the total work done in assembling the three charges, are you getting this point? Now I have to do the total work done in assembling the three charges. So when I have to find out the total work done in assembling the three charges, it will become W12 plus W13 plus W23. W12 indicates that work done due to the second charge when it is brought from infinity to point B, and one is the Q1 charge. So W12 is the charge work done by the first charge and the second charge, plus W13. W13 is the work done by the first charge and the third charge, plus W23 is the work done by the second charge and the third charge. So the total work done will become W12 plus W13 plus W23. So work done is given by W12, W13 plus W23. W12 is the work done by the first charge and the second charge. It is given by this W1/4πε0. We will give this as what, equation number 1.
This we will give as equation number 2. So to find out the total work done in assembling the charges is given by this W12, W13, W23. So W12 is added by the equation 1, W13 and W23 is added by the equation number 2. So when we consider W13, conceptually what you have to understand, W13 means work done by the first charge and the third charge. W23 means work done by the second charge and the third charge. So W13, how will you write? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 and Q3. Means W13 means we have to write the charge due to the Q1 and Q3 divided by R. Distance is taken between the same 2 point charges only. The distance will be taken between Q1 and Q3. So it is given by R13 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q3 by R23. So Q2 Q3 means it is the charge between the second charge and the third charge. Distance between them is given by what? R23. Is it clear? It is very simple derivation, not lengthy, but just you have to understand the concept. Concept is that when the 3 point charges are brought from infinity to that particular point, we will bring 1 by 1 charges. First A charge is brought. When A is brought, no work is said to be done. Second, we will bring the Q2. When we are bringing the Q2, then Q2 will have the work done, that is work done is given by W12. But when I am bringing the third charge will have the two types of work, W13 and W23. W13 indicates that work done by the Q3 because of Q1. And W23 indicates what? Work done by third charge due to the second charge. So after substituting this value W12, W13, W23, we are getting this equation. From this equation, what we will do is, what is the common term? 1 by 4 pi epsilon naught we will take out. So when we are taking the common term 1 by 4 pi epsilon naught, what will remain here? Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. So from this relation, what we understand, this is the total work done by the system of 3 point charges. If this is the total work done by the system of 3 charges, so this total work done will be stored in the system of charges as potential energy. जब हम कह रहे हैं कि ये तीनों की तीनों चार्ज इतना वर्क करेगा, तो जब ये इतना वर्क करेगा तो इतना वर्क will be stored in the 3 charges as the potential energy. So already we know in the first chapter also I had told you that whenever the work is done, the work done by the system will be converted into potential energy. So this total work done is converted into potential energy will become what? U. So this equation we will convert into work done into potential energy. Potential energy U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. So Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. So this is the total potential energy, where R12 is called as what? R12 is the distance between the charges Q1 and Q2. What is R13? R13 is the distance between the charges Q1 and Q3. And what is R23? Is the distance between the charges Q2 and Q3. So potential energy due to system of 3 point charges in absence of electric field will give this relation 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. So total potential energy of the 3 system of charges is given by this equation. तो ये कंप्लीट हुआ अपना टोटल डेरिवेशन. किसके लिए? ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तुम बोलोगे इसको एब्सेंस ऑफ क्यों बोल रहे हैं हम? एब्सेंस इसके अंदर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि पहला तीनों के तीनों चार्ज जब हम लेकर आ रहे हैं तो इनिशियली कोई दूसरा चार्ज नहीं है उधर. सो पहला चार्ज ला रहे हैं तो वो ए चार्ज के ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ए चार्ज आ रहा है तो उस वक्त कोई भी चार्ज नहीं था. सो वो
ए जो चार्ज है Q1 चार्ज है वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। मगर जब Q2 और Q3 ला रहे हैं तब क्या होगा, उसमें चार्ज रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। सो ये हमने देखा आज का सेकेंड एरिया। तो इस तरह से अभी हमने क्या कर लिया है, अब तक के जितने भी वीडियोज़ हुए हैं सारे के सारे अपने डेरिवेशंस सेकेंड चैप्टर के ख़त्म हो चुके हैं। तो कल हम रिवीजन लेंगे और पूरा जितना हमने लास्ट वीक में कंप्लीट किया था उसका एक रिवीजन ले लेंगे, पूरा फॉर्मूलाज में बता दूंगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना, आज का आज ही डेरिवेशन लिख के कंप्लीट कर लेना है।